to all of you. Today I, Ishika Rathi from class 7th A, presenting a poem on our national flag Tiranga. देखो बच्चों झंडा प्यारा, 3 रंगों का मेल है सारा। सदा रहे यह सबसे ऊंचा, आकाश को रहे यह छूता। सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान। झंडा है देश की शान, बना रहे यह सदा महान। जय हिंद। Good morning all of you, my dear teacher and my dear friends. Today I am telling you about the Punjab, its cuisine and its cuisine, heritage, its a land. Its state food is sarson ka saag and makke ki roti, but there are varieties of food like we call the butter chicken, that the king of the food of Punjabi, and the state bird is gloshhawk, which is called the baz in Hindi. It is a culture of petting them from long time, and its state flower is glossen. It is bloom in only month of October to March, and it is used in all over the world. Thank you. Good morning dear teachers and my friends. Today I, Ishika Rathi from class 7th A, presenting a speech on state food of Gujarat, undhiyu. Undhiyu is a Gujarati mixed vegetable dish that is a regional specialty of Surat, Gujarat, India. The name of this dish comes from the Gujarati word undho, which translates to upside down, since the dish is traditionally cooked upside down underground in earthen pots termed matlu, which are fired from above. Thank you. Good morning respected teachers and students. Today I am going to give a speech on lotus flower of state flower of Karnataka. Lotus is a beautiful flower that grows on the water surface. It grows in freshwater lakes and ponds. Lotus is the national flower of India and also a symbol of the ruling BJP party. The flower of the lotus is mostly pink or white in color. The lotus flower is also known as water lily. Thank you. कोई
सुप्रभात, मेरा नाम तरुषि जैन है। मैं क्लास 7th B की छात्रा हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है देखो 26 जनवरी है आई। देखो 26 जनवरी है आई, गणतंत्र की सौगात है लाई। देखो 26 जनवरी है आई, गणतंत्र की सौगात है लाई। अधिकार दिए हैं इसने अनमोल, अधिकार दिए हैं इसने अनमोल, जीवन में बढ़ सके बिन अवरोध, जीवन में बढ़ सके बिन अवरोध। हर साल 26 जनवरी को होता है वार्षिक आयोजन। लाल किले पर होता है जब प्रधानमंत्री का भाषण। नई उम्मीद और नए पैगाम से करते हैं देश का अभिवादन। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर अर्पित करते श्रद्धा सुमन। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर अर्पित करते श्रद्धा सुमन। 2 मिनट के मौन धारण से होता शहीदों को शत शत नमन। 2 मिनट के मौन धारण से होता शहीदों को शत शत नमन। सौगातों की सौगात है, गणतंत्र हमारा महान है। आकार में विशाल है, हर सवाल का जवाब है। लोकतंत्र जिसकी पहचान है, हम सबकी ये शान है। गणतंत्र हमारा महान है, गणतंत्र हमारा महान है। जय हिंद। Good morning, respected ma'am and all my fellows. Myself, Ishika Jain of class 7th A, is standing over to deliver a speech in front of you. West Bengal is a state in eastern India. Its capital is Kolkata. It is the 4th most populous state and 14th most largest state in Asia. State animal. The state animal of West Bengal is fishing cat. The fishing cat is a medium-sized wild cat of South Asia. State bird. The state bird of West Bengal is white-throated kingfisher. It is also known as vulture-breasted kingfisher. It is distributed in Asia. State plant. The state plant of West Bengal is night-flowering jasmine. Night-flowering jasmine, also known as Castrum nostrum. State food. The state food of this state is aloo patol posto. The state language of this state is Bengal. Bengal is the South Asian language. It is also known by its Andorian banjo. The state foundation day of this state is 20th June 1947. It is a federation made up of 28 states and 8 union territories. Thank you. Good morning to everyone who is present here on the prosperous occasion of Republic Day. My name is Manika Randad and I am from class 7B. I am here to speak a few words on this beautiful occasion. Every year, India celebrates its Republic Day on 26th of January. This year, India is going to celebrate its 72nd Republic Day, which is a very proud moment for all Indians. As we all know that we got independence on 15 August 1947 and accepted democracy on 26 January 1950. Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of Indian Constitution on 26 January 1949, which came into effect on 26 January 1950. The Indian Constitution is the supreme law of India, which assures citizen equality, justice and liberty. But after 72 years of republic and 74 years of independence, we Indians still face injustice, inequality and corruption. Don't you think these should throw out from our country and we should celebrate a real Republic Day? On the occasion of 72nd Republic Day, let us take a pledge to make our country a prosperous land of equality and justice everywhere. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. सुप्रभातम सर्वेषां स्वागतम। मम नाम लहर्ये गणतंत्र दिवसः। अतः अहं गणतंत्र दिवसस्य सम्बन्धे किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। भारत एकोनविंशः 47तमे ईश्वरीयवर्षे स्वतन्त्रम् अभवत्, परन्तु अस्माकं संविधानं 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 तारिकायां सचरन्तीम् अभवत्। 27 दिनाङ्क
आरभ्य भारतं पूर्णरूपेण गणतन्त्रराष्ट्रस्य पदम् अलभत्। अतः तद्दिनाङ्कः एव प्रतिवर्षः जनवरी मासस्य 26 तिथि भारतवर्षस्य सर्वे जनाः स्वनगरेषु गृहेषु च इमे उत्सवं महता उत्साहेन उल्लासेन च मानयन्ति। भारतस्य राजधान्यां दिल्लीनगरः विशेषरूपेण अयम् उत्सवः आकर्षकः भवन्ति। प्रातः एव लक्षमः जनाः भारतद्वारे एकत्रिताः भवन्ति। अङ्गरक्षकः सह विशिष्टवाहनेन राष्ट्रपतिभवनात् विजयचतुष्पथम् आगच्छति। निर्दोषी राष्ट्रपति सम्मान्यते। ततः जलसेना, थलसेना, वायुसेना सेनापति राष्ट्रपितं अभिनन्दन्ति। तत्पश्चात् नानाविधानि युद्धोपकरणानि, नानाविधानि वाहनानि, अश्वारोहा, उष्ट्रारोहा, गजारोहा पदात् यस्य सेनानि संचलनं कुर्वन्ति। तदनन्तरं कलाकारः स्वस्वप्रदेशस्य संस्कृति अनुसारं लीलामयानि मनोहराणि शोभास्त्रयानि समुपरन्ति। पश्चात् गीत नर्तयन्ति। कलाकौशलं विलोक्य सर्वे जनाः तुष्यन्ति। राष्ट्रः विविधभागेभ्यः अनन्तान् गजारूढान् वीरबालकान् राष्ट्रपति सम्मानयन्ति। जनाः मुग्धाः भवन्ति च। अन्यते गगने विमानानां चत्वारः पूर्ण उड्डयन कौशलं दृष्ट्वा जनाः अपि आनन्दम् अनुभवन्ति। सर्वत्र उत्साहः दृष्ट्वा जनाः तुष्यन्ति। रात्रौ राष्ट्रपतिभवनं, राजकीयभवनानि च विद्युद्दीपे शोभन्ति। वयं सर्वेषां भारतीयः उन्नते प्रयत्नं करिष्यामि। जय हिंद। धन्यवाद। वन्दे मातरम्। नमः तिरङ्गे। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीतः प्रणामः। मम नाम मनिका रांदड़। अहम एमएसएस पब्लिक स्कूल नाम विद्यालय सप्तमी कक्षायां पठामि। अद्य वयं सर्वे स्वाधीन भारतस्य 73 गणतन्त्रदिनोत्सवः आचरयन्तः। गणतन्त्रदिवसः भारतस्य प्रमुखः राष्ट्रीय पर्व अस्ति। प्रतिवर्षः जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के गणतन्त्रदिवसः। अयं दिवसः बहु महत्वपूर्णं विद्यते। अयं हि दिवसो अस्माकं प्रिय भारतदेशम् एकः प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रः घोषितवन्तः। अतः प्रतिवर्षे विभिन्न प्रजाराज्योत्सवः आचर्यते। अस्मिन् दिने देशस्य सर्वेषु नगरेषु राष्ट्रध्वजारोहणं भवति। अस्मिन् दिवसे प्रमुखः समारोहः राजधान्यां दिल्ल्यां समायोज्यः। सुखी राज्यं भवतु इति सदस्याः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय संविधान निर्माण कार्यस्य आरम्भः अभवत्। अयं दिवसो अस्मान् भवन् भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एकभावेन राष्ट्ररक्षार्थ राष्ट्रसेवार्थ च प्रयति। जय भारत मातरम्। जय भारत मातरम्। धन्यवाद।